Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. Hi, good morning. कैसे हैं आप सब? Hope you guys are doing well. Today is the day that we leave from Darjeeling. So, without any further ado, let's get this vlog started. So, आज सुबह से बहुत बारिश हो रही है. इनफैक्ट कल रात से काफ़ी बारिश हो रही है. So, we are very skeptical because from here we are moving to our next location. Let me show you how much it is raining. Just hold on. Look at that. Absolutely no visibility whatsoever. चलो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. क्या ही कर सकते हैं सिचुएशन का. That's the outfit of the day. So, checking out of the hotel now, it's about 10:20 on the clock and it's raining heavily. So, we are still speculating कि आगे की जो जर्नी हमने प्लान की थी वो करना है या we should head back because बारिश बहुत हो रही है. There's absolutely zero visibility and मुझे ये रूम छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही because we had a fabulous view. But now everything is covered with fog. But let me show you one last time before I check out from this room. Let me show you.
तो मौसम के ये हाल है अभी, कुछ भी नहीं दिख रहा। सो चलिए यहाँ पर से चेकआउट करते हैं। विल गो टू द रिसेप्शन बिकॉज उनको बैग ले जाने के लिए भी बोलना पड़ेगा, एंड देन वील हेड ऑफ टू सम प्लेस नेक्स्ट, और yeah, that's a decision that we have to take. So let's go. Bye bye. Let's take the steps and enjoy the view one last time. जो भी है नहीं, but ठीक है. Time to go. So, a little backstory. मैंने बताया था सुबह को कि because the weather was so bad, we had decided that we'll cancel our trip. So मैंने सारी bookings अपनी जो भी थी गैंगटॉक में वो cancel कर दी थी सुबह को. Luckily, they reverted like 15 minutes earlier than our cab booking, and we were able to get a full refund on our hotel booking. But nonetheless, within 15 to 20 minutes, like by 10:30, the weather became better. It was not raining as much. थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, and there was visibility as well. So हमने सोचा कि चलो इतने दूर आए हैं तो we will head towards Gangtok and देखते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं.
हाँ ऐसे ही है सर। ये अक्टूबर में होगा सर। Some news snippet of the incidents that have happened here. 50 lives and affecting thousands. This time, incessant rainfall has triggered massive landslides, killing at least 6 people, leaving around. Oh, bhai sahab, okay. तो शीशा ब्रिज में रोक दूंगा। हाँ। During the last floods, the water was almost till that bridge that you see. So that was almost the height that it had come to. So these are very tough terrains, and life for people here is tough. I wouldn't deny that, because if this connectivity breaks, then you cannot move from Darjeeling to Gangtok at all, and there's high chances that you would be stranded. एक साल हो गया अक्टूबर में। तो बांग्लादेश से आता है ना, बांग्लादेश जाता है क्या? और पानी इसके ऊपर से ही आता है चाइना। चाइना चाइना तो पानी कम किया था, गिरने के कारण से फोर्स और ज़्यादा बढ़ गया। फोर्स बढ़ने के कारण पानी अंदर से बहुत ज़्यादा तो अभी उसमें है। Literally, my heart was in my mouth, and because I was sitting on, the left side, I could actually see the river so close. I was literally scared, because the passage is very narrow for two cars to pass through. Also, is very difficult. थोड़ी सी भी इधर उधर चूक हुई, you go directly into the river.
with nothing to save you. You are just gone. मतलब रास्ते के साइड में कोई बैरिकेड्स है ही नहीं whatsoever. यही रास्ता ठीक हुआ है बोल रहे थे। नहीं, आगे का रास्ता भी ऐसा ही है। ये ऊपर में रेलवे का काम हो रहा है ना, टनल का, और इसीलिए पत्थर गिरता ही रहता है, और पत्थर गिरते ही रहता है। This is one of the most dangerous roads that I have been on. Look at the sides. On one side is this Tista River, which is really at a very high pace and flowing very rapidly, and there is no side rails whatsoever. And दूसरे side में continuously पत्थर गिर रहे थे. There was like slight chances of landslide, so I was like shit scared, but we had taken the uh, decision to take the journey ahead, so we had to just go on. There was no other option but just look at the condition of the roads. And it's not that there's nothing being done about it, but because of the heavy rains and the area that is prone to so much landslides, every time the roads are worked on, within a month it comes back to this situation. And what also happens is that the roads sink down, like they would be at a certain height and it would start sinking. So you would notice multiple areas have these placards which says sinking zone. So basically it is just sinking down because of the pressure. मेरोमा छ नि, यो एम्टी छैन नि त। कॉलेज Nasa Korea ko pauji ko आता सामान पर भी ट्रैवल एजेंट ଅଛି। ये हॉस्टल है, ये मोनोस्ट्री बहुत
waterfall, Taki viewpoint. आएगा और भी आएगा नाम लिखा है कोट कुजिबु देख ग्राम टेक 12 ऐसा होता है एग्जाम ₹2 लाख बच जाएगा और सब टैक्स में ही बचता है मेडिकल उधर घुमाइए कैमरा इधर जाएंगे हम लोग कैमरा घुमाइए ना मोनेस्ट्री का अच्छा है Most of the hotels you would find along this route, you can just spot as I'm going towards the mall road. You'll see most of the hotels here.
बात नहीं करना चाहिए वो तो रास्ता है तो फिर पूरे इधर हो सकती द होटल तो बड़ा अच्छा था बिकॉज़ आवर मेन क्राइटेरिया वाज़ कि वो मॉल रोड पे हो ताकि वी कैन विज़िट द मॉल रोड इन द इवनिंग एंड द नाइट एंड स्पेसिफिकली फॉर माय पेरेंट्स राइट बिकॉज़ जब हम दार्जिलिंग में थे दे वर नॉट एबल टू गो टिल द एमजी मार्ग सो आई वाज़ लाइक नहीं इस बार ही होटल हम मॉल रोड पे ही करेंगे व्हिच इज़ लाइक ईज़ी एक्सेस टू एवरीथिंग अराउंड एंड गॉड the hotel location was very good but जो रास्ता हमने लिया to reach to the hotel my god the slope and the steep that the गाड़ी had to climb through was oh my god and hats off to the driver जो इतनी उनकी एक्सपर्टीज थी कि वहाँ वो उस स्लोप पे भी थोड़ा बैक करके बिल्कुल भी वो पैनिक नहीं हुए इट वाज ऑलमोस्ट मोर देन लाइक 50-60 डिग्रीज इंक्लाइन होगा ओह माय गॉड आई वाज लाइक कि मुझे रोक के मतलब मुझे छोड़ दो आई विल वॉक एंड गो बट एक्चुअली ये थोड़ा टेढ़ा रास्ता था देयर वाज एक्चुअली अ डिफरेंट रास्ता जो पूरा प्लेन पे है and we did not know we called the hotel guy and the guy there gave us that route which was through the mall road man one another this is another treacherous part ये सब के लिए आपको थोड़ा prepared रहना पड़ेगा when you are in Gangtok or This Darjeeling. seems like a nice hotel. I at least love the location. There's direct access to the mall road. So we'll freshen up and then we'll head towards the mall road. Let's see what's in store there. So stay tuned. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like the video and subscribe to the channel. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, keep exploring and keep discovering.